But let me, without undermining some of the points that many members have said, I find it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actually data-driven concerns about price. इसीलिए मेरा जवाब भी थोड़ा पॉलिटिकली मैं देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए किसी मेंबर को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम जवाब सुनकर के ये क्या है, राजनीतिक भाषण दे रही हो, राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आपने बोले स्टार्ट आपने किया। सो इस बीच में ऐसे इंटरप्शन आना भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है सर। मैं बिल्कुल आपकी अनुमति से आगे बढ़ती हूँ। जब आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सदन में व्यवधान नहीं पैदा होने दूंगा। हाँ सर, आप हैं इसीलिए मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूंगा। आप उनको परमिशन मत दो कि वो व्यवधान पैदा करें। सर, लेट अस प्लीज बी इन दिस हाउस looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just 2 or 3 highlights will tell you where India is compared to the rest of the world, and why should we have to compare with the rest of the world? Because whether it was in 2008 or usse pehle, we've never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind, and coming out of the pandemic, even as all of us were trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that everybody, members of parliament and also state governments, have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for this kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they have downgraded the global growth, when they have reassessed, saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse, it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So, it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that the way in which global value chains have hit us. But in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. I think we... No, माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण,
आप सब ने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुने। सबको बता दिया माननीय मंत्री जी। So, globally when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment India has remained the highest, I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. And it is exactly this, sir. It is exactly this which I am trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying this country is suffering like that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves, rather than, excuse me, ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker, sir. Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. So, sir, it's important for us to, for all the members, through you, I would like to say, I'm quite convinced of every input given, and I think it's my duty to respond. But even before hearing me, if there's mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear. So I would seek your indulgence on that. Sir. Sir, this is why I want to say this to you. When there can be interruptions which are serious, and when there are mocking tone coming from there, I reserve my right as a member of this House to reply to those. And if that is treated as dumpty, what should be the first one which comes? Treated as mocking or dumpty? She is not a member of the House. Oh, thank you. Otherwise, I wouldn't be. All right, in that house or this house. Dada, you're always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि आप बैठे बैठे टिप्पणी न करें, और माननीय मंत्री जी इनकी बेटी टिप्पणी को आप सुने नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और ये मैं अपेक्षा करूंगा बैठे बैठे कोई टिप्पणी न करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। I'm not a member of this house, but with your permission, I'm here because I have to reply, sir. So the senior member, Saugata Roy, should probably take that into his, system. Oh, dear, thank you, thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions, na? Recall those days, because you always had that approach to women in the house. Sir. आप बोलिए ना।
आप बेटे बेटे टिप्पणी मत सुनिए आप कोई। Sir, the GDP of the US fell 0.9% in the second quarter, following a 1.6 decline in the first quarter, marking a start of what they call themselves an unofficial recession. There were some members who were saying, even Adirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured, there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please, Mani Sadash, please, no. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey which was done by economists, sir, has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and bank's health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compared globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honorable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central government very consciously has controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22. Compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we have brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the center and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both center and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, waves, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few comparisons. Today, sir, this morning, we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores.
second highest. And compared to the last year, this is one of the highest amount. This year in April, you may be aware, I'd like to gently remind, in April 2022, it was 1.67 lakh crores, which was the highest reached. Now we've got in July 22, the second largest, which is 1.49. This is the fifth consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. GST collections have been above 1.4 lakh crores consecutively for 5 full months. So the Manufacturing Purchasing Managers Index, which has also come out only in the morning, I think, and it is at 8 months highest number of 56.4 for July. So the trend for output and new orders are strengthening, so the economy is really getting even more robust. The PMI rose from 53.9 in June, I said it is 56.4 in July, well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level, separating growth from contraction for a 13th month in a sequence. So India's 8 infrastructure sector, all of them grew in double digits for the second consecutive month in June. Data released on for the month of June showed the core sector grew at 12.7% in June year on year. So strictly speaking, sir, Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs. I remind myself about the line Honorable Member Supriya Sule said, you know, it's enough, you can't be going on talking about earlier days. Now you've had enough number of time. She compared also very untypically to a married woman who enters the house. She gets to be a part of that house and you don't anymore say we are new, whereas what has been there and all that. But in these kind of situations, where constantly questions are based not so much on facts, I'm not talking about Supriya ji alone, but in general, when facts will have to be reminded, because the way in which questions are being asked as though it didn't exist earlier. Even now the leader of opposition said, please accept that inflation existed before the pandemic also. Inflation exists, sir. At what level is the question? So conceding to that point, I have no difficulty. Inflation exists. But at what level? And that is why, if you will pardon me, Honorable Member, I would like to go back to recalling. Let's not forget, for a small taper tantrum, I'm saying small today, of the Fed of 2008, the problem continued till 13, that the Indian economy became a fragile 5 country. But what are we today in? Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार-बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है. हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार-बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है? एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 13 में, 2013 में
मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर, रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है, 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था यूपीए के कार्यकाल में, 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया, 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। वो भी याद करना चाहिए जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे, करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे, मगर आप 22 मंथ्स में दानिश जी आप उठकर सही प्रश्न पूछे। ओ ठीक है सर, उनका नाम अगर दोबारा उठेंगे तो नाम ठीक है सर। रीड कर दो सर। तो इसीलिए हमें चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला, और इसीलिए कि वोट भी मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिला, 7% से नीचे ही रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन को। जो जनता के ये एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार वोट दिया, उसके अनुसार ही हमारा डिलीवरी भी हो रही है। सो याद रखना चाहिए सर, इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है, 7%, 22 मंथ्स 9% से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए, ठीक है। सो इससे ज्यादा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर और बोल सकती हूं सर, मगर समय भी हो रहा, आगे बढ़ती हूं। अरे 7 से कम हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ समस्या है। माननीय स्पीकर सर, मैं दोबारा, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदिर जी एक, हाँ ठीक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर के बोले कि देखो इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की है। सर इनको आदत है एक आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे। हाँ उनके आदत है, और ये भी है कि उन्हीं इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनका टिप्पणी के बारे में ही जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिए। मगर कौशिक बासु जी के नाम लिए, और हाँ रघुराम राजन भी है, क्योंकि वो उन्होंने बोल दिया, मैंने सोचा एक बार रघुराम राजन जी का बयान एक बार ध्यान दिलाएंगे। हाँ वो भी सही बात है, खुद अधीर रंजन जी इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट। सर शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ये बात बोले कि आरबीआई ने अच्छा काम किया, RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced
by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. So पाकिस्तान श्रीलंका का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं होने देना चाहिए, ऐसे करके आरबीआई ने अच्छा काम किया है, ये उनका टिप्पणी। और ये भी है, डिफरेंशिएटिंग इंडिया फ्रॉम इट्स वल्नरेबल नेबर्स, Sri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted, calling it a good sign. मैंने अभी डेट टू जीडीपी फिगर्स पढ़ा, नंबर्स भी पढ़ा आपके सामने, उसका रघुराम राजन जी भी जिक्र कर रहे हैं। जो दिल्ली, न्यू दिल्ली के सरकार डेट को कम रखना अच्छा काम किए हैं, और भी किए। माननीय प्लीज एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप हर सेकंड में उठना ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, गलत तरीका आपका है। आप माननीय मंत्री जी। सर, रघुराम राजन ने ये भी कहा है, वी हैव सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई हैज डन अ गुड जॉब इन इंक्रीजिंग द रिजर्व्स, वी आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम्स लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान, आवर फॉरेन डेट्स आर ऑल्सो लेस। इतना स्पष्ट बोले। नो प्लीज, तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल। आप मंत्री जी उनकी बात पे मत कहिए, मैं देख रहा हूं सब चीज। ठीक है। और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत चिंता कर रहे हैं आदिर रंजन जी। रघुराम राजन दोबारा इस विषय में क्या बोले? एट प्रेजेंट देयर इज इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। RBI is increasing interest rates which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also. Sir, ये RBI के तरफ के assessment रघुराम राजन जी ने बोला, और उससे ये भी समझ में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ है और इन्फ्लेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है। मगर but of course he did not say about measures we have taken from the government, from the Ministry of Finance to reduce the cost of imports on say like edible oil, masoor dal and so on. मैं उसको जिक्र करना चाह रही हूं सर। Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, Adir ji suniye, 35.75% to first 8.25 and now to 5.5% only. So drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible prices, oil prices can come down. On sunflower and soya bean oil, both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced it from other countries. The customs duty has been reduced drastically from 38.5% to 5.5%. We've taken out the customs duty so that कम दर पर edible oil भारत देश में पहुंचे, जनता को सस्ते में edible oil मिले। Second, sir, TRQs मतलब rates और tariff rate and quota restrictions आमतौर पर होता है। Nearly for 20 lakh metric ton of sunflower and soya bean oil, TRQ has been made nil. आप जितने चाहे इंपोर्ट करो, ड्यूटी बिल्कुल जीरो में इंपोर्ट करो, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा, सनफ्लावर ऑयल भी आएगा। सो स्टेप्स क्या आपने उठाया प्राइसेस कम करने के लिए? एक एक करके मैं बोल रही हूं। नेक्स्ट,
The prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May, with maximum decline of 18.1% coming in palm oil prices. The other categories are sunflower oil, soya bean, groundnut, mustard and vanaspati have also seen correction in the range of 1.7%, 1% to 7% in the last 1 month. Sir, सर, मुझे दुख लग रहा है बाहर जाकर के प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है, कहने वाले कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाहर वो भाग रहे बाहर, जवाब सुनने का क्षमता तक नहीं है उनको। यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस आपको जाने प्लीज। माननीय मंत्री जी, what have I done? They can go out, I should say. Sir, customs duty on masoor has been reduced. मारे सर प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए सर, बैठिए मैडम, प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री जी, सर पिछले पूरे सप्ताह सर पिछले एक सप्ताह और उससे पहले से भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले कांग्रेस और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे कि जब तक मेरा हालत कोविड से वापस आऊंगी तब तक प्लीज सह जाइए, फिर करेंगे, आपकी अनुमति से आज हो रही है। और उसके लिए मेरा शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी, प्लीज आप स्वस्थ रहो वगैरह, वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, निकल गए, पूरे कांग्रेस निकल गए सर। सो एक विषय अंदर और बाहर जाकर के दूसरे, जब चर्चा हो रही है वो नहीं रहते इधर, और बाहर जाकर सरकार भाग रही है, सुनने वाले नहीं है, चर्चा करने को मन नहीं है। अरे चर्चा तो हो रही है अभी। सो कांग्रेस का द्विगला दोहरा चरित्र इससे स्पष्ट हो रही सर। और कदम हमने उठाया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, मसूर दाल का कस्टम्स ड्यूटी भी
जो 30% तक था इंपोर्ट करने की, क्योंकि दलहन का बहुत ही सपोर्ट हम दे रहे हैं, किसान हमारे देश में दलहन अच्छा उत्पादन करें, इसलिए हाई ड्यूटी था 30%। मगर आज क्योंकि हमें दलहन भी चाहिए, मसूर दाल चाहिए, इसीलिए वो 30% से लेकर के आज 0 में आ गया है। मसूर दाल इंपोर्ट कर सकते हैं, सस्ते में मिलेगा। फिर डिस्टर्ब, आप सीनियर मेंबर, नो माननीय मंत्री जी, ठीक है। नो नो नो, ऐसे बीच में नहीं, आप माननीय मंत्री, आप सर सो दैट इज वाई सर, नहीं ठीक है, ठीक है। No, I fully recognize, I understand your question. All right. All right. सर, आज का इस परिस्थिति में, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है, तुरंत करना है, पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री जी दलहन के लिए, तिलहन के लिए बहुत ही सारे कोशिश कर रहे हैं, हर स्टेट में हर मंत्री के साथ बात करके इसको विस्तार करने के लिए और उत्पादन विस्तार करने के लिए। फिर भी क्योंकि आज हम प्राइस के विषय में चर्चा कर रहे हैं और तुरंत हमें जनता को सस्ते में पहुंचाना चाहिए, इसीलिए इंपोर्ट को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमारे किसान के खिलाफ हम जा रहे हैं। हमारे किसान को जितने भी प्रोत्साहन देना है, जितने भी बोनस वगैरह देना है दलहन और तिलहन के लिए, वो जरूर करेंगे। Sir, similarly, customs duty on steel was rationalized significantly. I know Pinaki ji raised an issue. I will address that. Further, customs duty was also exempted on iron and steel scrap, while customs duty was also rationalized on copper scrap. ये क्यों important है? MSME का रॉ मटेरियल में उनको प्राइसेस हाई जाने में, उनको उनके बिजनेस करने में बहुत ही दिक्कत था, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत मिला, इसीलिए उनके रॉ मटेरियल सस्ते में मिलने के लिए कस्टम्स ड्यूटी इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हटाया गया। फिर customs duty has also been exempted on coal, met coke, coking coal and ferro nickel। ये सब भी स्टील इंडस्ट्री को भी चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, उनको उनके सुविधा के लिए उन विषयों में भी कस्टम्स ड्यूटी ने कम करवाया, हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम करवाया। फिर स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अभी गिरावट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/10 उसमें कमी हुआ है, क्योंकि we have reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot rolled coil steel at the traders end have slipped by about 8%, or about 5,500 per ton since May 18. So top steel makers have also quoted prices for June that are lower by 4,500 or 5,500 a ton. इसका सरासर बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, जिससे उनका कारोबार में अच्छा चलने में इकोनॉमी भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। इन टेक्सटाइल्स सर, customs duty on key raw products like nylon chips, nylon yarn and caprolactam have all been rationalized. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fiber, PTA and other fibers and yarn, so that raw material for textile industry will also be available. Customs duty on raw cotton has also been fully exempted. Raw cotton का बहुत ही डिमांड, और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके बारे में बहुत चर्चा है, उसमें भी ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और सस्ते में रॉ मटेरियल हमारे लोग को मिलने के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया। 38 लाख टन्स ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ
free food grains were provided for every month for 8 months to 75.8 crore beneficiaries, हम सबको मालूम है. This year too, वो September 22 तक हमने अनाउंस कर दिया. सिर्फ एक विषय माननीय अधीर जी ने पूछा मगर निकल गए, सीपीआई के बारे में बात करो, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करो. सर 2012-13 में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 10.505 था, 13-14 में 9.38 था परसेंटेज, 14-15 में 5.83, 15-16 में 4.91. ऐसे करके हमारे कार्यकाल में 6.16 2020-2021 में पहुंचा, मगर वो भी 10% से तुलने में कुछ भी नहीं है. 10% था 2012-13 में, ये याद रखना चाहिए सर. और एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बोलना चाह रही हूं. 2011-12, 12-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 था, वेरस अभी 1920 में 7.35. ऐसे करके हर लिस्ट में अभी जो रेट है सर, चाहे वो फूड ग्रुप हो, पान सुपारी टोबैको हो, फ्यूल एंड लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है. वो डबल डिजिट में, अभी हमें सिंगल डिजिट में है.